Good morning, students. Welcome back to chemistry classroom once again. Today I will start from nitrogen. So look at your book. Nitrogen is an inactive gas. It neither burns nor supports burning. मतलब खुद भी नहीं जलेगा और जलने में भी सपोर्ट भी नहीं करता है. The volume of nitrogen in air is 4 times that of the oxygen. But in the atmosphere, the volume of nitrogen is 4 times more than the oxygen. Due to the presence of excess nitrogen, therefore, a substance does not burn so fast in air as the pure oxygen. As because the excess nitrogen, a substance does not burn so fast. इसी कारण कोई substance बहुत जल्दी जल भी नहीं सकता है in air as in pure oxygen also. वैसे भी pure oxygen में भी we can remove oxygen, carbon dioxide and water vapor from air. It has been found that the remaining gas behaves much like our nitrogen. तो नॉर्मली हम लोग अगर एयर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिलीज कर देंगे मतलब रिमूव कर देंगे it has been found that the remaining gas behaves like nitrogen. Thus we can conclude that air contains nitrogen. इसी कारण हम बोल सकते हैं air contain nitrogen. Nitrogen is an essential element for plants and animals alike. Plants get nitrogen from air and animals get nitrogen from plants through a complicated reaction. Proteins, which are so essential for all living beings, are nitrogen containing compounds. इसके नीचे दाग लगाना. Proteins basically who you intake. That is a very essential for all living beings. It is a nitrogenous substance. Enzyme that make chemical reaction occur in a biological system, and hemoglobin, which is the main constituent of blood, are basically protein. So muscles and hair are made of proteins. Milk, pulses, eggs, meat and fish are rich sources of proteins. Next, ये एक्टिविटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. A long activity. Next, carbon dioxide. Carbon dioxide is released in air during respiration and burning. जब हम लोग नॉर्मली कोई चीज़ को जलाएंगे एटमोस्फियर में, in this process lots of carbon dioxide released. Same way in respiration process we release carbon dioxide in the atmosphere. In respiration we use oxygen and breathe out carbon dioxide. The burning of fuels like coal, wood, petrol, diesel and kerosene results in the formation of carbon dioxide. The proportion of carbon dioxide in air increasing, especially in cities. Normally, the proportion of carbon dioxide in the air proportionally greater than cities. This is because the numbers of generators, automobiles, and thermal power are increasing. क्योंकि दिन ब दिन जो generators which are running through diesel or kerosene, automobiles factories like running on petrol, diesel or CNG, and thermal power plants basically burning coal are increasing day by day. That's why they release lots of carbon dioxide in the atmosphere. You know that carbon dioxide turns lime water milky. Air also turns fresh lime water milky when bubble through it. So air contains carbon dioxide. नॉर्मली तुम लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. वैसे ही अगर एयर ऑल्सो टर्न्स फ्रेश लाइम वाटर मिल्की. दैट्स वाई एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. Here is the activity. It is important. Pour some freshly made lime water in a glass. Cut out a cardboard disc and fix straw in it as shown in figure 6.2.
सो एक तो ग्लास में ऐसे लाइम वाटर लिए, उसके बाद ऊपर में ऐसे कार्डबोर्ड लगा दिए. Fix the disc over the glass using a sealing agent. Put your mouth to straw B and breathe in through your mouth. Straw B, ऐसे दो स्ट्रॉ घुसा दिए A एंड B और पुट योर माउथ टू स्ट्रॉ बी स्ट्रॉ जो है अपना माउथ में घुसाना है. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. थोड़ी देर बाद देखेंगे लाइम वाटर धीरे धीरे मिल्की हो रहा है. Air gets drawn into the bottle through straw A because you take it out through straw B. Carbon dioxide in air turns the lime water milky. A से जो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड ये घुस रहा है, घुसने के द्वारा एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होने के बाद ये लाइम वाटर मिल्की हो रहा है. नेक्स्ट, वाटर वेपर. If any cold surface is exposed to air, water vapor condenses over it. So air contains water vapor. अगर कोई कोल्ड सरफेस हम लोग एयर में एक्सपोज करेंगे, वाटर वेपर कंडेंस ओवर इट, देखेंगे उसके ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो रहा है. सो एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एक्टिविटी देखो. Put a few ice cubes in the dry glass. You will find droplets forming on the other surface of the glass. These droplets turn white and hydrous copper sulfate blue. So the droplets are of this water. In fact, the water vapors of air condense on the cool outer surface of the glass to form a droplets of water. तो नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे, अगर ग्लास, एक तो सूखा ग्लास में अगर फ्यू पीस ऑफ आइस क्यूब रखेंगे, देखेंगे ग्लास का बाहरी जो सरफेस है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहा है. अगर वैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ अगर हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को पकड़ेंगे, एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. सो नॉर्मली विच काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस डज नॉट कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल इन इट, दे आर नोन एज एनहाइड्रस सॉल्ट. सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को पकड़ने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसको कलेक्ट करने के बाद दैट टर्न इनटू ब्लू. इसी कारण इट प्रूव दैट द वाटर ड्रॉपलेट्स दैट इज जो नॉर्मली ग्लास के बाहर में फॉर्म हो रहा है, so the droplets are those of water. In fact, the water vapors of air condense on the cool water surface of the glass of the droplets of water. मतलब बाहर वाली दीवार में जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहा है ये एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रस सॉल्ट में ट्रांसफर कर रहा है. Other gases. Apart from oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor, some more gases are present in air. Among these, an element called argon is the main component. You will learn about these gases in higher class. Conclusion. You know that the components of a mixture are not present in fixed proportion. So in case of mixture, the components are not present in a fixed proportion. Retain their properties. They can easily retain their properties and can be separated by physical means. मतलब we can separate them by using some physical method. So you have learned that the first two properties are applicable to the components of air also, and the components of air can be separated by a physical means. Known as the frictional distillation. In this method, air is liquefied and then the various components of liquefied air are distilled at a different temperature. So normally we can easily separate out the defined composition of air by using fractional distillation process. Here as a components then liquefied at different temperatures. So from what we have discussed, we can conclude that air is a mixture. So student, I hope all of you understood. So for today, up to this portion.